In this video, I discuss about some important signs and appearance related to chest and abdomen. Let's start. First, ground glass opacity or GGO, increased lung attenuation with preserved vascular marking. It is basically seen in HSCT lung window. Consolidation. This is homogeneous opacity obscuring pulmonary vessel. होमोजेनस ओपेसिटी दिखाई देता है लंग सीटी स्कैन में, which is obscuring pulmonary vessels. Next, air bronchogram, air filled bronchi visible within consolidated lung. consolidated lung के ऊपर एयर फील्ड ब्रोंकाई दिखाई देता है. क्रेजी पेविंग पैटर्न, GGO with interlobal septal thickening, tree in bird appearance, centrilobular branching nodules due to bronchiolar disease, tree in bird appearance due to bronchiolar disease. Next, honeycombing appearance, stalked sharp pleural cystic air spaces in pulmonary fibrosis. honeycombing is basically seen in case of pulmonary fibrosis, जिसमें साफ प्लूरल सिस्टिक एयर स्पेस दिखाई देता है. नेक्स्ट, हेलो साइन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी सराउंडिंग है पाल्मोनरी नोड्यूल. इसमें एक पाल्मोनरी नोड्यूल के आसपास ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखाई देता है, इसको बोला जाता है हेलो साइन. नेक्स्ट, रिवर्स हेलो साइन और आटल साइन, सेंट्रल जीजीओ सराउंडेड बाय कंसोलिडेशन. इसमें सेंट्रली ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी रहता है जिसको सराउंडेड करके रहता है कंसोलिडेशन. नेक्स्ट, एयर क्रिसेंट साइन, क्रिसेंट ऑफ एयर सराउंडिंग ए फंगल बॉल और नेक्रोटिक टिश्यू. बॉल लाइक स्ट्रक्चर के आसपास एयर जमा हो जाता है, इसको एयर क्रिसेंट साइन बोला जाता है. नेक्स्ट, फीडिंग वेसल साइन, वेसल्स डायरेक्टली एंटरिंग ए पाल्मोनरी नोड्यूल. जब पाल्मोनरी नोड्यूल के डायरेक्टली अंदर वेसल दिखाई देता है तो उसको फीडिंग वेसल साइन बोला जाता है. नेक्स्ट, सिग्नेट रिंग साइन, डायलेटेड ब्रोंकस लार्जर देन इट्स accompanying artery. नेक्स्ट, ट्राम ट्रैक का साइन, पैरेलल थिकनिंग ब्रोंकियल वॉल्स इन ब्रोंकिक्टिसिस. ब्रोंकिक्टिसिस के केस में दिखाई देता है ट्राम ट्रैक साइन. नेक्स्ट, फिंगर इन ग्लोब साइन, this is basically mucus filled dilated bronchi. Next, bad weak appearance is seen in case of pulmonary edema, which is bilateral perihilar pulmonary edema. Hampton hump, this sign is seen in case of peripheral wedge-shaped pulmonary infraction. Next, West mark sign, regional oligemia in pulmonary embolism. Watermark sign is basically seen in case of pulmonary embolism, which is regional oligemia. Next, split pleural sign, thickened enhancing pleura in emphysema. ये साइन एंड सिम्टम्स समझने से ज़्यादा उसको मेमोराइज करने का ज़रूरत है. इसमें पूछा जाता है कि कौन सा साइन कौन सा डिजीज में दिखाई देता है. सपोज पूछेगा कि वेस्ट मार्क साइन कौन सा डिजीज में दिखाई देता है, तो उसमें आंसर होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ऐसे इसको याद रखना है. स्प्लिट प्लूरल साइन, थिकेंड एनहांसिंग प्लूरा इन एम्पायमा. meniscus sign, this is seen in curved upper border of pleural effusion. meniscus sign is seen in pleural effusion. Hydropneumothorax, hydro means water, pneumo means air. So basically hydropneumothorax is air and fluid within the pleural cavity. Tension pneumothorax, pneumothorax with mediastinal shift. When mediastinal shift is associated with pneumothorax, this is called tension pneumothorax. Next, bullae,
एयर फिल्ड स्पेसेस लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के ज़्यादा बड़ा अगर एयर फील्ड स्पेस होगा तो उसको हम बुलाई बोलते हैं। ब्लेब्स, स्मॉल सब प्लूरल एयर कलेक्शन। न्यूमेटोसिल, thin walled air filled cyst after infection. Mosaic attenuation, patchy lung attenuation due to airway or vascular disease. Centrilobular nodules. Nodules center in secondary pulmonary lobules. Next, miliary nodules. Numerous teeny randomly distributed nodules. This miliary nodules is seen in case of miliary TB. Next, random nodules, hematogenous pulmonary nodules. Next, perilymphatic nodules. पेरी मीन्स पेरिफेरल, लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक वेसल्स जो होता है उसका पेरीफेरी में जो नोड्यूल्स दिखाई देता है उसको पेरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोलता है। सो बेसिकली नोड्यूल्स अलोंग lymphatic pathways. Subpleural reticulation. Fine peripheral fibrotic lines. Septal thickening. Thickened interlobular septa. Traction bronchiectasis. Bronchial dilation due to fibrosis. Traction bronchiectasis is seen in case of fibrosis. Next, fibrotic band. Linear fibrotic scar in lung parenchyma. Atelectasis. This is also a finding of HSC thorax. Collapse of lung tissue with volume loss. Basically, sometimes in case of atelectasis, we can see lung volume loss with collapse of lung tissue. Next, volume loss sign. Displacement of fissures or mediastinum. Cavitary lesion. Gas filled cavity within consolidation or mass. एक मास के अंदर अगर गैस फिल्ड कैविटी बन जाए तो उसको बोलता है कैविटरी लीशन। नेक्स्ट, कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा। हील्ड ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन। एक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन जो क्रॉनिक है, जो हील्ड हो चुका है, तो उसको कैल्सिफिकेशन होने के बाद कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा बोला जाता है। एक सेल कैल्सिफिकेशन। थिन पेरिफेरल नोडल कैल्सिफिकेशन। mediastinal widening suggestive of aortic injury or mass. Due to aortic injury or mediastinal mass, we can see the mediastinal structure become widened. This is called mediastinal widening. Next, pericardial effusion. Pericardial means peripheral to cardiac. Effusion means accumulation of fluid. So fluid around the heart is called pericardial effusion. Next, cardiac tamponade appearance. Large pericardial effusion compressing the heart. Next, aortic dissection flap. Intimal flap dividing true or false rumen. Saddle pulmonary embolus. Thrombus at the pulmonary artery bifurcation. जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी बाइफर्केट होता है उस रीजन पे अगर थ्रोम्बस बन जाए तो उसको बोला जाता है सैडल पल्मोनरी एम्बोलस। नेक्स्ट, esophageal wall thickening. This is basically seen in case of CA esophagus or esophagitis. Next, target sign. This is important. This is seen in case of CT abdomen, concentric bowel wall enhancement. A circular concentric bowel wall enhancement. Double target sign. This is 3-layer bowel wall appearance. Whirlpool sign. Twisting of mesenteric vessel is seen in case of twisting mesenteric vessel. We can see the whirlpool sign. Next, coffee bean sign. It is also very important. Coffee bean sign is actually seen in sigmoid volvulus. This is seen CT scan as well as X-ray abdomen. Bird beak sign. This is seen in tapering esophagus.
tapering bowel or esophagus. Comb sign. Comb-like sign is seen in engorged mesenteric vessel in Crohn's disease. So comb sign is basically seen in Crohn's disease. Next, apple core sign. This is also very important. Apple core sign is seen in colonic carcinoma, or specifically constricting colonic carcinoma. Next, string sign. This is also seen in abdomen, which is marked luminal narrowing in Crohn's disease. Crohn's disease में जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो बहुत नैरो हो जाता है. जो इंटेस्टाइन का लूमेन होता है वो एक्चुअल साइज से बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो उसको बोलता है स्ट्रिंग साइन, विच इज सीन इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज. नेक्स्ट, एक्कॉर्डियन साइन. सीवियर स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में दिखाई देता है. थंब प्रिंटिंग, विच इज सीन इन इडेमेटस बावल वॉल. नेक्स्ट, डबल डक्ट साइन, seen in dilated CVD and pancreatic duct. Corkscrew appearance. Twisted vowel in volvulus. Corkscrew appearance is seen in twisted vowel or in volvulus. Small vowel faces sign. Fecal material is dilated in small vowel. Closed loop obstruction. Obstruction at two adjacent point. सपोज लेंथी इंटेस्टाइन है, तो अगर ये दो जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये पूरा रीजन को बोलता है क्लोज लूप्ड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये लूप बन गया है जो क्लोज्ड है. नेक्स्ट, न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस. गैस विद इन बावल वॉल. गैस बेसिकली बावल लूमेन में होता है. अगर वही गैस बावल वॉल में दिख जाए तो उसको बोलता है न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस. नेक्स्ट, पोर्टल वेनस गैस. गैस विद इन पोर्टल वेनस ब्रांचेस. रेगुलर साइन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सीन इन एयर outlining of both side of bowel wall. Football sign seen in pneumoperitoneum. जब पेरिटोनियम में एयर दिख जाए उसमें इसको बोलता है फुटबॉल साइन. दिस इज ऑल्सो मैसिव पेरिटोनियम के केस में दिखाई देता है. क्रिसेंट साइन. साफ कैप्सुलर हेमाटोमा और impending aneurysm rupture. Sentinel clot sign. Hyperdense clot near bleeding source. Active contrast extravasation. Ongoing hemorrhage on CT contrast. Active contrast extravasation means actively जो contrast कोई अंदर का ओपन पार्ट में ओपन हो रहा है, which is suggestive of vascular damage or ongoing hemorrhage on contractility, basically on arterial phase. Next, fat stranding. Inflammatory changes in surrounding fat. Fat stranding is very important. We can see fat stranding in plane image or NCCT image. Next, omental cake. Diffuse omental metastasis. Peritoneum nodularity. Peritoneal calcinomatosis में देखा जाता है. Scalloping of liver. Peritoneal mucinous deposits. Next, capsular retraction. Fibrotic liver lesion में दिखाई देता है. Nutmeg liver in case of chronic venous congestion. Fatty liver, low density hepatic steatosis. Cirrhotic liver morphology, nodular liver contour. Hemangioma enhancement, peripheral nodular enhancement. Hemangioma is enhanced as like peripheral nodular enhancement.
Washout appearance seen in hepatocellular carcinoma. पोर्सलेन गॉल ब्लैडर, कैल्सिफाइड गॉल ब्लैडर वॉल, इसको बोला जाता है पोर्सलेन गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट, डबल वॉल गॉल ब्लैडर साइन गॉल ब्लैडर वॉल इडिमा में दिखाई देता है। डायलेटेड सीवीडी और कॉमन बाइल डक्ट। सीवीडी तभी डायलेटेड होता है जब उसका डिस्टल पार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो डायलेटेड सीवीडी इज सीन इन केस ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। Gallstone appearance seen in hyperdense calculus in gallbladder. Pancreatic necrosis seen in non-anemic pancreatic tissue. Peripancreatic fat standing seen in acute pancreatitis. Walled off necrosis, encapsulated pancreatic necrosis. Pseudocyst appearance, fluid collection without solid debris. This signs is basically seen in CECD or triphagic upper abdomen. Beer paw sign. Xanthogranulomatoous pyelonephritis में दिखाई देता है। Static nephrogram, alternating renal enhancement, delayed nephrogram, delayed contrast enhancement, or delayed renal contrast excretion. Cortical rim sign seen in peripheral renal cortical enhancement. Staghorn calculus, it is branched renal pelvic stone, large stone branch like staghorn. Hydronephrosis, dilated pelvic calcial system, किडनी का जो pelvic calcial system होता है उसका डायलेशन को बोलता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोयूरेटर इज बेसिकली डायलेटेड यूरेटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्टल एंड। यूरेटर के डिस्टल एंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो यूरेटर का अपर पार्ट डायलेटेड हो जाता है, उसको बोलता है हाइड्रोयूरेटर। नेक्स्ट, एड्रिनल एडिनोमा, लो एटेन्यूएशन एड्रिनल लीशन, एड्रिनल हेमरेज, हाइपरडेंस एनलार्ज एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, aortic aneurysm, focal dilation of aorta, retroperitoneal hematoma, blood collection behind the peritoneum, free intraperitoneal air, pneumoperitoneum from bowel perforation, free intraperitoneal fluid in case of ascites and hemoperitoneum. Mesenteric edema seen in increased mesenteric fat attenuation, mesenteric lymphadenoma, enlarged mesenteric lymph nodes. Big sign is seen in tapering at the site of torsion or volvulus. Claw sign, this is seen in organ parenchyma wrapping around a mass, indicating organ origin.